So today we have to do October November 2024 paper 1 variant 3. So this is AS level physics October November 2024 paper 1 variant 3 1 hour 15 minutes का paper. Let's start with that. Okay. Which statement about physical quantities is correct? कौन सा statement about physical quantities is correct? Physical quantities does not always have a magnitude or a unit. No. A physical quantity must always have a magnitude and a unit. D is your correct answer. One की तो definition. Basically, the definition of physical quantity is your answer for one. That is, your physical quantities must have a what? ठीक है? That is, your physical quantities must have a magnitude and a unit. Okay. What is a reasonable estimate of the mass of a solid sphere of copper that has a diameter of 60 cm? Okay, so if you have a diameter of 60 cm, what will your volume come out to be? Volume is equals to 4 over 3 pi r cube. Diameter 60 है, radius क्या हो जाएगा? 30 cm. Okay, so what will your volume turn out to be? 4 over 3 pi into the radius, that is 30 into 10 raised to the power of minus 2 का whole cube. Can you calculate the volume, बच्चों? Volume निकाल सकते हो? Yes. 4 over 3 into pi into r, that is 30 into 10 raised to the power of minus 2 का cube. What will your answer come out to be? Your volume is 0.113 meter cube. आपका वॉल्यूम आ रहा है 0.113 मीटर क्यूब. ओके. व्हाट इज अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द मास ऑफ अ सॉलिड स्फीयर? बेटा क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है? हैव वी स्टडीड दिस फॉर्मूला के मास इज इक्वल्स टू व्हाट? मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ये फॉर्मूला हमने बहुत दफा पढ़ा है. नाउ इफ यू रियलाइज हियर, आपके पास वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? हाँ जी, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम इज 0.113. कॉपर की डेंसिटी का एस्टिमेट लगा सकते हो? कॉपर की डेंसिटी क्या होगी? रफली लेट्स से अगर 5000 भी ले लेते हैं, लेट्स से द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 5, मल्टीप्लाई इट हियर. व्हाट डज योर मास कम्स आउट टू बी? मल्टीप्लाइड बाय 5000 करो, योर मास कम्स आउट टू बी 565 kg. दैट इज क्लोजेस्ट टू 1000 kg. इस तरह से आपने सॉल्व करना था. ऑब्वियसली आई नो देयर आर सम एस्टिमेशंस हियर, और इस वजह से इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत ही तुक्केबाजी होती है. यू हैव टू अज्यूम कि कॉपर की डेंसिटी इज 5000, somewhat greater than the density of water, multiply it, you will get your answer. The power output, okay, of a star can be modeled using this equation. Okay, so this is the equation which we can model the power output, where phi is the constant, a is the surface area of the star, t is the temperature of the star. What are the SI units of phi? आपने phi के SI base units निकालने. You will make phi the subject. Power divided by area into temperature की power 4 is your units of phi. अब मुझे बताओ बेटा, पावर के यूनिट्स क्या होते हैं? पावर के यूनिट्स क्या होते हैं? पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, है ना? पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम. एनर्जी के क्या यूनिट्स होते हैं? के जी एम टू एस माइनस टू डिवाइडेड बाई सेकेंड. के जी एम टू एस माइनस थ्री आर योर यूनिट्स ऑफ पावर. के जी एम टू एस माइनस थ्री divided by area, that is meter square. Kelvin power 4 is your units of phi. Meter square get cancelled out. Kg s minus 3, I will take this Kelvin to the top side. K minus 4 are your units of phi. क्या आंसर आ जाएगा? 3 का आंसर turns out to be B. Simple. आगे बढ़ते हैं. A ball, a boy throws a stone with a horizontal velocity of 10. अच्छा जी, ये कौन सा मोशन हो रहा है? हाफ projectile motion. Why? Sir, how do you know that this is half projectile motion? क्योंकि इनिशियली आपके पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ऑफ 10 फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 8. द स्टोन ट्रेवल्स अलोंग द कर्व पाथ until it hits the horizontal ground as shown. Air resistance is negligible. अगर air resistance negligible होगी, you will take acceleration as 9.81 meters per second square. Okay. How long does it take for the stone to reach the ground? You have to tell how long does it take for the stone to reach the ground.
बेटा जब भी आप हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहे होते थे और यू आर लॉन्चिंग योर ऑब्जेक्ट विथ ओनली अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जब भी आप आपके ऑब्जेक्ट को सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ लॉन्च करते थे, योर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बिकम जीरो. Your initial vertical velocity is zero. Acceleration in the vertical plane is 9.81 meters per second square. The displacement in the vertical plane is 8 meters. Can you calculate the time? Can you calculate the time taken to reach the ground? Yes, S is equals to ut plus half a t square. This will become zeroed out. S क्या है 8, half into acceleration क्या है 9.81 into time t का square. 8 into 2 divided by 9.81 taken under root will give you your value of time. टाइम की वैल्यू निकालो भाई कैलकुलेटर में डाल के. 16 divided by 9.81 taken under root. This comes out to be 1.27. That is equals to 1.3 seconds as your time. 1.3 seconds आपका time आ गया. अच्छा जी, let's see this. Four cuboids with identical lengths, breadths and heights are immersed in water. अच्छा जी, ये फोर क्यूबॉइड्स हैं जिनकी आइडेंटिकल लेंथ्स हैं, ब्रेथ्स हैं एंड हाइट्स हैं, आर इमर्ज्ड इन वाटर. The cuboids are held at the same depth and in the same orientation by vertical rods as shown. अच्छा जी, ये सब जो है सेम डेप्थ्स पे हैं, वर्टिकल रॉड से हमने इन्हें होल्ड किया. परफेक्ट. Water has a density of rho. Cuboid W is made of a material of density of 4 rho. Cuboid X is made of material of density 2 rho. Cuboid Y is made of density of rho. Cuboid Z is made of density of 0.5 rho. ठीक है. Which statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है. अब अगर आप रियलाइज करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर इमर्स्ड इनसाइड वाटर, इन सब पे एक अपथ्रस्ट की फोर्स लग रही होगी. What is the formula of upthrust? Upthrust is equals to the density of the fluid, gravitational field strength into the volume of the object that is immersed inside the liquid. Can you realize ये सारे के सारे water में immersed हैं? What will be the density? Rho g. What is the volume? सबकी lengths identical हैं. So all will have the same volume. बेटा हर क्यूबॉइड पे लगने वाला अप थ्रस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट? डेंसिटी जी एल बी एच. हर क्यूबॉइड पे लगने वाला अप थ्रस्ट विल बी इक्वल टू डेंसिटी जी एल बी एच. All of them have the same height, length and breadth and all of them have the same densities. So A will be your answer. The upthrust of water in each of the cuboids is the same. Simple. In which example is it not possible for the underlined object to be in equilibrium? भाई किस एग्जाम्पल में इक्विलिब्रियम में होना is not possible. Okay. An aeroplane climbs at a steady rate. Okay. Basically an aeroplane is climbing at a steady rate. क्या ये equilibrium में हो सकता है? Yes. The forward force can be equal to the backward force. An aeroplane tows a glider at constant altitude. Yeah, this can also be in equilibrium. A speedboat changes direction. बेटा जब आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो क्या होता है? योर वेलोसिटी changes. As your velocity changes, you undergo acceleration. As you undergo acceleration, resultant force is produced. और जब भी resultant force produce होगी, you are not in equilibrium. ठीक है, जब भी resultant force produce होगी, you are not in equilibrium. C is your answer. यहाँ तक is everything clear? First 6 questions clear हैं सारों को? Okay, so let's move on to question 7. Two identical balls are projected vertically upwards from ground level with the same initial velocity. Ball X is in a vacuum, ball Y is in air. अच्छा जी, ball X आपके पास आ गई है. It is in a vacuum. Okay. It is projected vertically upwards with a velocity of u. Then you have a ball that is in air, that is ball X. It is also projected with the same velocity. Perfect. Which statement about the motion of the ball is correct? Obviously, the ball in the vacuum will have a greater maximum height. Okay, so ball in vacuum will have a greater maximum height. What about the time?
Beta, there will be many people who will tell you a ratified answer for this or tell you something that you have to remember, but you don't have to remember anything. You just have to apply some formulas. Do you remember S is equals to U plus V divided by 2 into time? Yeah. At the maximum height. At maximum height. Now, this is a logical reasoning to the answer. At maximum height, your vertical velocity becomes 0. S is equals to U over 2 into time t. Can you realize initial velocity over 2 is a constant value? That means maximum height is directly proportional to time, or the vertical displacement is directly proportional to time. Since x has a greater maximum height, it will also have a larger time to reach that height. A is your answer. The graph shows the variation of velocity with time t for a stone that falls from a bridge into a lake and sinks to the bottom of the lake. Perfect. What can be deduced about the motion of the stone? Okay, what can be deduced about the motion of the stone? Terminal velocity was reached in air. No. बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो ये स्टोन का मोशन है इन एयर टर्मिनल वेलोसिटी वाज नेवर रीच्ड एयर जैसे ही आपका स्टोन वाटर में सिंक करना शुरू हो जाता है या वाटर में क्या लिखा हुआ है हाँ as it falls into a lake the resistive forces increase जैसे ही आपका स्टोन क्या करता है as your stone falls into a lake your resistive forces increase जैसे ही resistive forces increase होंगी velocity decrease कर जाएगी and in the water or in the lake you reach a terminal velocity ये terminal velocity आप जो है वाटर के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर रहे हो बट एयर के अंदर नहीं द एक्सेलरेशन इन एयर वाज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग टाइम या बी इज करेक्ट क्या आप रियलाइज कर सकते हो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इन एयर इज अ डिक्रीजिंग कर्व दिस इज अ डिक्रीजिंग कर्व वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन if in air you have a decreasing curve, that means the gradient of velocity time graph was decreasing. If gradient was decreasing, that means acceleration was decreasing. B is your answer. देखो हमने किस तरह रिड्यूस किया है इसको हमने ये देखा है कि द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन एयर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एयर में किस तरह का ग्राफ है डिक्रीजिंग कर्व का मतलब क्या है कि ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा होगा यहाँ पे since the gradient of velocity time graph is decreasing the gradient of velocity time graph is equals to your acceleration that means your acceleration is decreasing in the air with increasing time b is your answer आगे बढ़ते हैं the graph shows the variation of momentum with time t for a car ठीक है what is the resultant force at time t is equals to 10 seconds okay आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है एट समवेयर हियर टाइम टी इज इक्वल्स टू 10 सेकंड्स ये मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ है डू यू रिमेंबर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम कैन यू मार्क 2 पॉइंट्स हियर कैन यू मार्क 2 पॉइंट्स हियर यस ये हो जाएगा एक्स एक्सिस में 0 वाई एक्सिस में 1 ये हो जाएगा एक्स एक्सिस में 20 वाई एक्सिस में 4 so this is 0 1 this is 24 this is x1 y1 this is x2 y2 can you calculate the gradient because the gradient of this graph will be equal to what gradient of momentum time graph will be equal to your force can you calculate the gradient here yes gradient किसके equal आ जाएगा y2 that is 4 minus y1 that is 1 x2 that is 20 minus x1 that is 0 are there any prefixes yes y-axis पे you have 10 की power 4 so you will multiply this by 10 की power 4 calculate the force बच्चों 3 into 10 raised to the power of 4 divided by 20 your answer comes out to be 1500 B is your answer यहाँ तक चलो 10 करते हैं फिर आपसे पूछते हैं कि कोई कंफ्यूजन है तो two objects x and y form an isolated system अच्छा जी दो objects हैं x and y that form an isolated system x and y collide and then separate the mass of x is greater than the mass of y mass of x is greater than the mass of y
Which statement about the collision is correct? The change in momentum of y is greater than the change in momentum of x. No, change in momentum of y should be equal and opposite to the change in momentum of x. The force on y is greater than the force on x. No, no, दोनों options cancel out. The force that x and y exert on each other act for the same length of time. बेटा जो फोर्स x लगा रहा है y पे और जो फोर्स y लगा रहा है x पे, they act for the same amount of time. Always remember that collision same amount of time के लिए हो रहा है ना, so the force also acts for the same amount of time. C is your answer. ठीक है, चलो. Which row states where the total momentum and total kinetic energy are conserved in an inelastic collision in which there are no external forces? टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है वेदर देयर इज एन इनइलास्टिक कोलिजन और एन इलास्टिक कोलिजन. सी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट अबाउट टोटल काइनेटिक एनर्जी? इन एन inelastic collision the total kinetic energy is not conserved. B is your answer. 11 का आंसर क्या हो जाएगा? B. चलो आगे बढ़ते हैं. A tennis ball is thrown vertically upwards. The tennis ball reaches its highest point and then falls back to the point from which it was thrown. अच्छा जी, एक टेनिस बॉल है जिसको आपने थ्रो किया है अपवर्ड, इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, देन इट फॉल्स डाउनवर्ड टू द ग्राउंड अगेन. एयर रेजिस्टेंस इज सिग्निफिकेंट, मतलब एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है. एट वुड at which position on the path of the tennis ball is the resultant force on the tennis ball greatest? Resultant force कब greatest होगी? At the start, just after the tennis ball is released? I think this answer is correct. बेटा स्टार्टिंग में रिजल्टेंट फोर्स ग्रेटेस्ट होगी. व्हाई? बिकॉज इन द स्टार्टिंग ओनली द वेट इज एक्टिंग, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. Hence, the resultant force in the starting will only be equal to weight. It will be greatest. जैसे जैसे आप ऊपर मूव करते रहोगे, your air resistance force will start to act. Your resultant force will decrease. So at the starting, you only have weight as your resultant force. Your resultant force is the greatest. Which statement correctly describes a couple? Couple को कौन सा statement correctly describe करता है? A couple is a pair of forces that act in the same direction. No. A couple is a pair of forces. No. A couple is a pair of forces that act to produce a resultant force. No. A couple is a pair of forces that act to produce rotation. Only D is your answer. ठीक है. A couple is a pair of forces that act to produce rotation. Perfect है. आगे बढ़ते हैं. Now let's further move ahead. आगे देखते हैं इसको. A uniform beam of mass 1.4 kg. यूनिफॉर्म बीम का मतलब क्या है? Weight acts in middle, is pivoted at P. Okay, as shown. The beam has a length of 0.6 meter and P is at a distance of 0.2 meters from one end. Okay, P is at a distance of 0.2 meters from one end. Loads of 3 kg and 6 kg are suspended at a distance of 0.35 and 0.15 meter from the pivot as shown. Okay. What is the torque that must be applied to the beam in order to maintain equilibrium? Equilibrium का मतलब क्या होता है? Anti-clockwise movements must be equal to clockwise movements. Okay. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट द एंटी-क्लॉकवाइज मूवमेंट. यहाँ पे सेंटर ऑफ बीम है, देयर इज अ मास ऑफ 1.4 kg. वेट क्या हो जाएगा? 1.4 into 9.81. Can you calculate the weight of the beam? 1.4 into 9.81. This comes out to be 13.7. 13.7 न्यूटन का वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है. ओके, दिस इज योर पिवट पी. लेट्स कैलकुलेट द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. ठीक है, लेट्स कैलकुलेट द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेट लग रहा है कितने डिस्टेंस पे पिवट से? बेटा पिवट से कितने डिस्टेंस पे ये वेट लग रहा है? कैन यू रियलाइज द इंटायर लेंथ ऑफ द बीम is 0.4 plus 0.2. टोटल लेंथ ऑफ द बीम क्या है? 0.6 मीटर्स. तो ये वेट किधर लग रहा है? 0.6
3 meters from each end. बिल्कुल मिडल में वेट लग रहा है, राइट? 0.1। हाँ, तो 0.3 मीटर फ्रॉम ईच एंड मतलब बिल्कुल मिडल में आपका वेट लग रहा है। आपका पिवट कहाँ पे पोजिशन है? योर पिवट इज पोजिशन 0.2 मीटर्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? If the total distance from the position of weight to the end is 0.3, यहाँ से pivot से लेकर यहाँ तक is 0.2, this distance will be 0.1 मीटर। तो वेट की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा? 13.7 into 0.1. This comes out to be what? 13.7 into 0.1 is equals to 1.37 न्यूटन मीटर। अब ये 3 kg वाला भी निकाल लो। 3 kg का वेट क्या हो जाएगा? 3 into 9.81. What does your answer comes out to be? 3 into 9.81. Your answer comes out to be 29.4 Newton. This 29.4 Newton generates an anti-clockwise movement. Pivot से इसका distance क्या है? 0.35. This thing. So your weight is what? 29.4 multiplied by 0.35. ये anti-clockwise movement क्या आ गया? In 2.35. This comes out to be 10.3 न्यूटन मीटर। अच्छा जी, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम क्या आ गया बेटा? 10.496 है। क्या कह रहे हो, क्या है? जो सम है वो 10.49 है। अच्छा 10.49 है, ठीक है। चलो 10.49 कैसे हो गया? 1.37 प्लस 10.3। अच्छा मैंने सर 1.4 लिया। 11.6 न्यूटन मीटर इज योर टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्या अब आप क्लॉकवाइज मोमेंट भी निकाल सकते हो? द क्लॉकवाइज मोमेंट इज ड्यू टू दिस 6 kg का मास। वेट क्या आ जाएगा? 6 into 9.81। ये क्या आ जाएगा? 6 into 9.81। This turns out to be 58.9 न्यूटन। और ये कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है? 0.15। व्हाट विल योर क्लॉकवाइज मूवमेंट बी ड्यू टू दिस? द क्लॉकवाइज मूवमेंट इज 58.9 multiplied by 0.15. This comes out to be what? 8.83 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज मोमेंट आपका ये है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपका ये है। हाउ मच मूवमेंट डू यू नीड टू बैलेंस आउट द सिस्टम? 11.6 minus 8.83, कैलकुलेट करो। 11.6 minus 8.83, your answer comes out to be what? 2.77 newton meter, that is roughly equal to 2.8 newton meter. D is your answer. 14 का आंसर would be D। बात समझ आई? कैलकुलेशन heavy question. Let's further move ahead. Which object is in equilibrium? अच्छा, equilibrium की दो conditions होती हैं, you have to remember that. Resultant force should be equal to 0 और second condition क्या होती है? Resultant moment should be equal to 0. Equilibrium की बच्चे दो conditions होती हैं, resultant force should be equal to 0, resultant moment should be equal to 0. Okay, let's analyze option P. ऑप्शन पी में कैन यू रियलाइज रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपकी जीरो है। वाई? बिकॉज द फोर्स ऑन द राइट साइड किसके इक्वल है? 20 plus 10, that is 30. फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू व्हाट? 20 plus 10, अगेन 30 न्यूटन। दोनों राइट और लेफ्ट की फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्टेंट फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो। व्हाट अबाउट रिजल्टेंट मोमेंट? रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा? हाँ जी, रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा? ठीक है, नाउ रिजल्टेंट मोमेंट यहाँ पे क्या होगा? कैन यू रियलाइज दिस 20 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, ये वाली 20 न्यूटन की फोर्स, ये वाली 20 न्यूटन की फोर्स विल रोटेट द ऑब्जेक्ट इन विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और ये 10 न्यूटन की फोर्सेस कहाँ रोटेट करेंगी? इन द एंटी क्लॉकवाइज। इन द एंटी क्लॉकवाइज। क्या आप रियलाइज कर सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो 10 न्यूटन की फोर्सेस से कॉज हो रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो 20 न्यूटन की फोर्सेस से कॉज हो रहा है। सो रिजल्टेंट मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो
T इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो जो भी ऑप्शन में P है उसको कैंसिल आउट कर दो। अब जरा कौन से वाले को देखें, Q को देखते हैं। सर ये समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया बच्चे इसमें? पिवट कहाँ है इसमें, हमने मोमेंट्स कैसे निकाले? पेमेंट ये ले लो बीच वाले पॉइंट का। ठीक है, अगर बीच वाला पॉइंट पिवट हो रहा है तो ये 20 न्यूटन वाली फोर्स जो है, चलो इसको एक और तरीके से समझ लो। अच्छा, कैन यू रियलाइज ये 20 न्यूटन की फोर्स टुवर्ड्स द राइट साइड आग कर रही है, ये 20 न्यूटन की फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड आग कर रही है, दिस फॉर्म्स अ कपल। ये कपल आपके ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये 10 न्यूटन की फोर्स, ये 10 न्यूटन की फोर्स क्या है? दिस इज ऑल्सो अ कपल, दिस विल रोटेट योर ऑब्जेक्ट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा एक कपल आपके ऑब्जेक्ट को, लेट्स से दिस मिडिल ग्राउंड इज योर पिवट, एक कपल आपके ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दैट इज ऑफ 20 न्यूटन। और 10 न्यूटन वाला कपल आपके ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, रिजल्टेंट मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट्स 20 न्यूटन की फोर्स से कॉज हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स 10 न्यूटन की फोर्स से कॉज हो रहे हैं। अब आई बात समझ। इफ यू रियलाइज क्यू में तो एक बहुत ही बड़ा मसला है, द फोर्स दैट इज एक्टिंग डायगनली अपवर्ड्स इज 80 न्यूटन, और ये डाउनवर्ड वाली फोर्स 60 न्यूटन है। यहाँ पे तो रिजल्टेंट फोर्स ही नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आपने आगे की चेकिंग ही नहीं करनी, सी भी आपका आंसर नहीं होगा, डी इज योर आंसर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेट्स फर्दर मूव अहेड। The diagram shows two liquids P and Q that do not mix. Okay, you have two liquids that do not mix. The liquids are in equilibrium in an open U tube. Three equal distances x are labeled. अच्छा जी, three distances x are labeled. What is the ratio of density of x divided by the density of P? आपने ratio of density of x divided by the density of P निकाल दी। अब बेटा क्या आपको ये बात याद है कि लिक्विड में सेम पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होता है? लेट्स से दिस इज पॉइंट x, लेट्स से दिस इज पॉइंट y, द प्रेशर एट पॉइंट x मस्ट बी इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट y। व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट x? हाँ जी, प्रेशर एट पॉइंट x क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड P मल्टीप्लाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, दैट इज 2x। पॉइंट y पे प्रेशर क्या होगा? Density of liquid Q multiplied by G multiplied by the height x. X cancel out, G cancel out. You have to calculate the density of P divided by the density of Q. नीचे आ गया ये, यहाँ पे 1/2 आपका आंसर आ गया। A is your answer for 16. Simple. आगे बढ़ते हैं। A stone of mass, अच्छा जी, एक स्टोन है जिसका मास क्या है? 0.3 kg, is thrown vertically downwards with a speed of 20 meters per second from a height of 12 meter above the ground. It falls vertically until it hits the ground. Air resistance is negligible. What is the kinetic energy of the stone just before it hits the ground? Okay. देखो बेटा, आपकी इनिशियल स्पीड क्या है? 20 हो गई। डिस्टेंस क्या है? 12 मीटर्स। आपकी एयर रेजिस्टेंस क्या है? 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। कैन यू कैलकुलेट द फाइनल स्पीड? यस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा जी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है? 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 9.81 इंटू द डिस्टेंस दैट इज 12। कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी की वैल्यू निकाल सकते हो, 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.81 इंटू 12 टेकन अंडर रूट। वी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? फाइनल स्पीड की वैल्यू क्या आ गई? 25.2 मीटर्स पर सेकेंड। हाउ विल यू कैलकुलेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन? 1/2। मास क्या है? 0.3 इंटू 25.2 का होल स्क्वायर, 25.2 का होल स्क्वायर इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 2। योर काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी 95 जूल्स। डी इज योर आंसर। सिंपल रखना है चीजों को, फॉर्मूलाज लगाने हैं और काम हो जाएगा। A student can run up
can run or walk up the stairs to her classroom. Okay. Which statement describes the power required and the gravitational potential energy gained while running up the stairs compared to walking up? बेटा पावर का क्या फॉर्मूला? पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम. अगर आप रन अप कर रहे हो तो आप कौन सी एनर्जी गेन कर रहे हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम इज इक्वल टू पावर. रनिंग प्रोवाइड्स मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? नहीं, नहीं. Running provides the same gravitational potential energy, however, it uses more power. Why? बेटा रनिंग में आप हाइट तो सेम गेन कर रहे हो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होगी. बट इफ यू आर रनिंग, योर टाइम decreases. एंड कैन यू रियलाइज टाइम एंड पावर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर टाइम डिक्रीज करेगा तो पावर ज्यादा यूज होगी. सी इज योर आंसर. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. आगे बढ़े. कोई भी ऐसी मसले वाली चीज लगती है तो फौरन से पूछ लिया करो. अच्छा जी. A weight of W hangs from a trolley that runs along a rail. अच्छा जी, ये ट्रॉली है जो कि रन कर रही है along a rail. ठीक है. The trolley moves horizontally through a distance of P. Okay, trolley move कर रही है horizontally through a distance of P. Okay. Then raises the weight through a height Q. अच्छा जी, then raises a weight through a height of Q. Okay. As a result, the weight moves through a distance of r. ठीक है, weight move कर रहा है distance of r from x to y. It starts and finishes at rest. अच्छा जी, starting और finishing position पे आपका जो है weight जो है वो zero पे. How much work is done on the weight during this process? What a beautiful question. आपने क्या निकालना है? Work done on the weight. Work done का क्या फॉर्मूला होता है? Work done is equals to, इसको मैं लिख देता हूँ, वर्क डन ऑन द वेट निकालने ना, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वेट की फोर्स क्या होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. डाउनवर्ड डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में आपने कितना डिस्टेंस मूव किया है? ओनली क्यू. तो डब्ल्यू क्यू इज योर वर्क डन. बेटा देखो, जब भी वर्क डन निकाल रहे होते हो, यू टेक द फोर्स एंड मल्टीप्लाई इट विद द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. फोर्स वर्टिकली लग रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? क्यू. वर्क डन कम्स आउट टू बी डब्ल्यू क्यू. The equations for kinetic energy can be derived from the equation of motion. Four equations related to the motion are listed. Which three equations can be used to derive kinetic energy की equation? काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव करने के लिए कौन सी तीन इक्वेशंस यूज हुआ करती थी? याद है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? 1/2 mv². हमने इस फॉर्मूला को किस तरह ड्राइव किया था? यस, ये फॉर्मूला को किस तरह ड्राइव किया था? फोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा था वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है, ये इधर ले आओ. डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वट एवर यू वांट टू से. फोर्स की जगह हमने क्या रख दिया था? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस. तो ये वाला फॉर्मूला तो जरूर यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला भी जरूर यूज होगा. सेकेंड ऑफ ऑल हमने क्या कहा था? v square is equals to u square plus 2as. We assume that our object was starting from rest. v square divided by 2s is equals to acceleration. Acceleration को यहाँ पे substitute कर दिया था. v square divided by 2s into s. s cancel out. तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? ये वाला भी यूज कर रहे हैं. 1 2 and 3 all are being used. 20 का आंसर ए होगा. आगे बढ़ते हैं बेटा. और आप देख सकते हो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव हो गई है 1/2 mv². अब 21 पे आ जाओ. The force extension graph of a metal wire is shown. At which point on the graph does the metal wire stop obeying Hooke's law? कौन सा point limit of proportionality है? Obviously point A. Point A पे आपका linear relationship between force and extension finish. That is where Hooke's law stops being obeyed. A uniform wire is made of a metal that has a Young's modulus of this. Okay. The wire is 2.4 meter long, has a spring constant of this. What is the volume of the wire? आपने volume of the wire निकालना है. किस तरह निकालोगे? First of all, you will say spring constant is equals to FL over AE. ठीक है. आपका Young's modulus किसके इक्वल होता है? FL over AE. Can you realize force over extension किसके इक्वल है?
यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट L ओवर E। क्या आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया को सब्जेक्ट बना सकते हो? यस, के एल ओवर द यंग्स मॉडुलस। के का फॉर्मूला क्या, या के की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 2.7 10 raised to the power of 4। What is the numerical value of length? 2.4 divided by Young's modulus, that is 1.3 into 10 raised to the power of 11। Can you calculate the area? Area निकाल सकते हो? 2.7 10 raised to the power of 4 into 2.4 divided by 1.3 10 raised to the power of 11। Young's modulus, oh sorry, area क्या आ जाएगा आपका? 4.98 10 raised to the power of -7 meter square is your area। आपने क्या निकालना था बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम किस तरह निकालोगे? एरिया इंटू लेंथ। एरिया आ गया आपके पास 4.98 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -7। लेंथ क्या है? 2.4। मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट डज योर आंसर ऑफ वॉल्यूम कम्स आउट टू बी? 1.19 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -6। एनी आंसर्स लाइक दैट? डी इज योर आंसर। 22 का आंसर इज डी। सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर। 23 पे आ जाते हैं भाई। A rubber cord hangs from a rigid support. A weight is attached to its lower end, is gradually increased from zero and then gradually reduces to zero। अच्छा जी, एक weight attach कर रहे हो to the lower end of the rubber cord। weight को आप gradually increase कर रहे हो from zero and then it is gradually reduced to zero। ये आपका force versus extension graph है। The force versus extension graph for contraction and for stretching is shown। What does the shaded area between the curves represent? अच्छा जी, shaded area between the curve क्या represent कर रहा है? The elastic potential energy stored in the rubber band। हाँ जी, क्या ये represent कर रहे हैं? No, the thermal energy dissipated in the rubber band। अब आपने पूछना चाहिए सर, why doesn't it represent the elastic potential energy stored in the rubber band? Because can you realize आपकी initial extension zero थी, final extension भी zero है। There is no permanent extension। देर इज नो परमानेंट एक्सटेंशन, इसलिए आपका जो स्प्रिंग है या रबर कॉर्ड है वो कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा। द शेडेड एरिया इज द थर्मल सर एनर्जी। हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर मुझे लगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एरिया अंडर द ग्राफ है, इस वजह से नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। तो ये एरिया अंडर द ग्राफ तो है ना, नहीं, ये लेकिन पूरा एरिया नहीं है ना। अच्छा ठीक है, हाँ, फुल ये भी ग्राफ। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन हेयर द करेक्ट रीजन इज कि यहाँ पे आपकी कोई भी परमानेंट एक्सटेंशन नहीं हो रही, इसलिए जब आपने फोर्स हटा भी दी है आपकी कोई परमानेंट एक्सटेंशन नहीं हो रही। दैट्स व्हाई नो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द रबर कॉर्ड, हेंस बी इज योर आंसर। ये थर्मल एनर्जी लॉस्ट है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाओ। A source of sound wave of constant frequency is traveling as shown। In which situation would the stationary observer डिटेक्ट अ साउंड विथ लोअर फ्रीक्वेंसी? अच्छा, कौन सी सिचुएशन में आप एक लोअर फ्रीक्वेंसी का साउंड डिटेक्ट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी सोर्स टूवर्ड्स जा रही है वो वाले ऑप्शन तो कैंसिल आउट कर दो। यू विल ओनली ऑब्जर्व अ लोअर फ्रीक्वेंसी इफ योर सोर्स इज मूविंग अवे। सी और डी में से देखना है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब यू हैव द ग्रेटेस्ट स्पीड of the source moving away। D is your answer। Each of the principal radiation of the electromagnetic spectrum has a range of wavelength। Which wavelength is correctly linked to its radiation? कौन सी wavelength और radiation correctly linked है? Can you realize ultraviolet की wavelength क्या होती है? In the region of 10 raised to the power of -8। C is your answer। A transverse wave has a frequency of this, wavelength of this, and an amplitude of this। W is a particle that is initially at the peak of the wave as shown। What is the total vertical distance traveled by P in a time of 0.5 seconds? अच्छा जी, आपने निकालना है कि ये पार्टिकल 0.5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू हैव द फ्रीक्वेंसी? यप। कैन यू कैलकुलेट द टाइम पीरियड? यप। 1 डिवाइडेड बाय 15 क्या आता है? कैलकुलेट करो। 1 डिवाइडेड बाय 15, दिस कम्स आउट टू बी 0.067 सेकेंड्स। ठीक है,
ये आ गया आपका टाइम पीरियड. ओके, दिस इज योर टाइम पीरियड, दैट इज 0.067 सेकेंड्स. ओके, आपके पास कितना टाइम है बेटा? 0.5 सेकेंड्स. इफ वन वेव इज गेटिंग कंप्लीटेड, अगर वन वेव कंप्लीट हो रही है कितने टाइम पीरियड में? If one wave is getting completed in 0.067 seconds, 0.5 seconds में कितनी waves complete होंगी calculated? जरा calculate करो. You will have 7.5 waves. 7.5 waves complete होंगी in 0.5 seconds. अब सिर्फ मैजिक देखते जाओ बेटा. जब एक वेव कंप्लीट होगी तो ये पॉइंट पी किस तरह मूव करेगा? लेट्स से दिस इज योर मीन पोजीशन. फॉर वन वेव और वन ऑसिलेशन ये पॉइंट पी किस तरह मूव करेगा? An amplitude downward, then an amplitude downward like this, then an amplitude upward, then an amplitude upward. तो एक वेव में आपका पॉइंट पी कितने एम्पलीट्यूड्स कवर कर रहा है? 4. दैट इज 4 इंटू 4 मिलीमीटर, दैट इज 16 मिलीमीटर. तो एक वेव में आपका पॉइंट पी 16 मिलीमीटर ट्रैवल कर रहा है. 7.5 वेव्स में कितना ट्रैवल करोगे? x comes out to be what? 16 into 7.5. What is your answer? 16 into 7.5. What is your answer? 120 millimeter. C is your answer. 26 का आंसर क्या हो जाएगा? C. Let's further move ahead. A wave is formed on a spring. A student plots the graph of variation of displacement d with time for a point on the string. The student marks 2 points x and y. अच्छा जी, x और y ये point mark दे. Which property of the wave is represented by the distance along the horizontal axis x and y? Can you realize this is the time का axis? इस point से लेकर इस point तक can you realize one wave is getting completed? The time taken for one wave to get completed is known as your time period. C is your answer. Easy peasy. आगे बढ़ते हैं. A stationary wave is set up in a stretched string. Which distance is equal to the wavelength of the wave? कौन सा distance जो है वो wavelength of the wave के equal है? Double the distance of adjacent antinodes. एंटीनोड से एंटीनोड तक का डिस्टेंस लेट से d है. वी नो एंटीनोड टू एंटीनोड का डिस्टेंस इज हाफ लैम्डा इज इक्वल टू d. If you double the distance, that will obviously be equal to the wavelength. A is your answer. ठीक है, दो एंटीनोड्स के बीच के डिस्टेंस को अगर आप डबल कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर ऑफ वेवलेंथ, दैट इज ए. सर व्हाट आर एडजेसेंट नोड्स? एडजेसेंट एंटीनोड्स लिखा हुआ है बच्चे. एडजेसेंट एंटीनोड्स का मतलब ये है कि लेट्स से ये आपका एक एंटीनोड है, ये आपका एक एंटीनोड है, एक के बाद दूसरा एंटीनोड, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? हाफ लैम्डा. ठीक है. Let's see question number 29. Okay. A source of coherent light is incident on two slits P and Q, which are separated 80 millimeter apart. This is your value of A. Okay. The light have a frequency of this. Okay. So the light has a frequency of this. The light from the slits meet on a screen that is a distance of 4 meters apart. Okay. So this is your capital D. The screen is parallel to the line joining the slits. Okay. An intensity sensor is placed on the screen at the midpoint of the interference pattern such that the intensity sensor reading is a maximum. अच्छा, currently यहाँ पे बीच में the intensity sensor reading is maximum. Perfect. Basically you are at the central bright fringe. Currently अगर बीच में आपकी reading maximum है, you are at the central bright fringe. The intensity sensor is moved along the screen. The sensor travels around two intensity minimas, two intensity maximas, and stops in the middle of the third intensity minimum. Okay, so let's analyze. This is the central bright fringe. After the bright fringe, you will have the first dark fringe. After that, you will have the first bright fringe. After that, you will have the second dark fringe. After that, you will have the second bright fringe. After that, you will have the third dark fringe. Can you realize from central bright fringe to the first bright fringe, your distance is x. From the first bright fringe to the second bright fringe, your distance is again x. From the first bright fringe to the third dark fringe, your distance will be half x. So basically, what do you have to calculate? X plus x
प्लस हाफ एक्स दैट इज इक्वल टू 2.5x। ओके, और x किस तरह निकालेंगे बेटा? x का फॉर्मूला होता था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, lambda d over a. Now if you realize you are not given the wavelength, instead you are given the frequency. But can you realize this is light? Light की स्पीड क्या होती है? 3 into 10 raised to the power of 8 meters per second. V is equals to f lambda, velocity क्या है? 3 into 10 raised to the power of 8. Frequency क्या है? 1.5 10 raised to the power of 12. Can you calculate wavelength? Yep. Wavelength निकाल लो बेटा, 3 into 10 raised to the power of 8 divided by 1.5 into 10 raised to the power of 12. Can you calculate the wavelength? हाँ जी, 3 into 10 raised to the power of 8 divided by 1.5 into 10 raised to the power of 12. Wavelength comes out to be 2 into 10 raised to the power of minus 4 meters. Wavelength क्या आ गई बेटा? 2 into 10 raised to the power of minus 4 meters. D की वैल्यू क्या है? 4. What is the separation? 80 millimeter. 80 into 10 raised to the power of minus 3. Can you calculate x? X निकाल सकते हो, आंसर into 4 divided by 80 into 10 raised to the power of minus 3. X comes out to be 0.01 meters. You have to calculate 2.5x, 2.5 into 0.01. This comes out to be 0.025 meters. You have to give your answer in millimeters. Whenever you are going from meters to millimeters, आप क्या करते हो? Multiplied by 1000. 0.025 multiplied by 1000. This will become 25 millimeter. C is your answer. A vibrating bar produces surface water waves in a ripple time. The wavelength of the wave is this and they pass through a gap of this. ठीक है, wavelength आपकी 5 सेंटीमीटर है, gap ये है. Which change will increase the amount of diffraction that is observed? किस change की वजह से amount of diffraction increase हो जाएगी? Yes, decreasing the distance between the bar and the gap, decreasing the frequency. अच्छा, आप frequency decrease करोगे तो क्या होगा? Your wavelength increases. If your wavelength increases, the amount of diffraction will increase. B can be your answer. 30 का answer is B as well. Let's further move ahead. What is an electric current? Electric current क्या होता है? You can say electric current is the flow of charge carriers. A is your answer. आगे बढ़ जाओ. A wire of diameter D is connected into an electrical circuit. Okay. There is a current I in the wire and the charge carriers have an average drift speed of V. Okay. The wire is replaced with a new wire of the same material but with a 0.5 diameter. The current is adjusted so that the charge carriers in the new wire have a drift velocity of 3v. What is the new current in the wire? अच्छा जी, हमने न्यू करंट इन द वायर निकालने हैं, किस तरह निकालेंगे? थोड़ा सा जरा सोचना पड़ेगा इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट द ओल्ड वायर. ओल्ड वायर में क्या है? यू हैव अ डायमीटर डी. ओके, you have a current I, you have a drift velocity of V. Okay. So अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस करके वर्किंग कर दूं, let's do one thing. Old wire. Old wire में क्या है भाई? Old wire में you have a diameter of D, drift velocity V, current I, charge is Q. Okay. So can you make current the subject here? Yes. I is equals to NAQ V. एरिया की जगह हम क्या रख देंगे? आई इज इक्वल टू एन इंटू पाई डी स्क्वायर ओवर 4 QV. ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं. करंट इज इक्वल टू एन पाई डी स्क्वायर QV डिवाइडेड बाय 4. एरिया का क्या फॉर्मूला लगाया है? पाई डी स्क्वायर ओवर 4. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यू वायर. अब न्यू वायर की तरफ आ जाओ. For the new wire, you have the wire of the same material. That means n आपका सेम रहेगा. n क्या है? Number of charge carriers. Diameter क्या हो गया? 0.5 d. Okay. Do you have the new velocity? Yes, 3v. Charge आपका वही है. You have to calculate the new current. करंट का क्या फॉर्मूला होता है भाई? करंट इज इक्वल टू NAQV. आपका n वही रहेगा. एरिया क्या हो जाएगा? पाई
अब डी की जगह क्या आ जाएगा, 0.5 डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। क्यू क्या है, वो ही रहेगा, वेलोसिटी इज 3v। ओके, ये करो जरा स्क्वायर इसका, ये क्या हो जाएगा, एन पाई 0.25 डी स्क्वायर। अच्छा, ये 0.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड में यू विल गेट 0.25 एन पाई, ओके, डी स्क्वायर क्यू एंड 3v से मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग समवेयर। थोड़ा सा इसको और जूम इन करते हैं। व्हाट यू कैन डू इज 3 को मल्टीप्लाई कर दो 0.25 से, व्हाट विल हैपन, 0.75 एन पाई डी स्क्वायर क्यू वी upon 4. Can you realize this entire thing is equals to what? This entire thing is equals to your current I. So what will your new current become? Your new current is equals to 0.75 I. क्या आंसर आ रहा है? A is your answer. 32 का answer is A. A lengthy question but very logical if you go step by step. Okay, let's see question number 33. A fixed resistor and a diode are combined by connecting them in series. The total potential difference across the combination is varied and the corresponding current I is measured, which graph I should represent the current versus voltage graph. अच्छा जी, थोड़ा सा focus करना पड़ेगा यहाँ पे. First of all, can you realize this is the circuit? This is a resistor. You have a diode connected in series with the resistor like this. There is a diode connected in series with the resistor like this. This is your voltage supply like this. Now, do you remember how does the current versus voltage graph of resistor looks like? बेटा resistor का current versus voltage graph याद है किस तरह का लगता था? A straight line. Perfect. और डायोड का करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ है, याद है किस तरह लगता था? Somewhat like this. Zero initially and then a curve. बेटा इनिशियली आपका ग्राफ क्या हुआ करता था, हॉरिजॉन्टल एंड देन अ कर्व लाइक दिस. So this is for the diode. The left one is for the resistor. How will we draw the combined graph? Now बेटा डायोड की ना कुछ प्रॉपर्टीज समझो. डायोड में the current doesn't flow until the voltage is above the threshold voltage. बेटा हर डायोड का ना अपना थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है. यूजुअली थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, यूजुअली डायोड्स का थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट. जब तक आप 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते, डायोड में करंट फ्लो नहीं करता. दिस इज रिप्रेजेंटेड हियर इन द हॉरिजॉन्टल रीजन. जब तक आप वोल्टेज 0.7 वोल्ट या थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा प्रोवाइड नहीं करते, डायोड में करंट फ्लो नहीं करता. ओके, तो सर अगर डायोड में करंट नहीं फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टर में भी नहीं फ्लो करेगा, बिकॉज दे आर इन सीरीज. अगर डायोड में करंट जीरो होगा अप टिल 0.7 वोल्ट, तो रेजिस्टर में भी करंट जीरो होगा अप टिल 0.7 वोल्ट. एनी आंसर्स लाइक दैट? कोई ऐसा सर्किट या ग्राफ है जिसमें आपका करंट जीरो रह रहा है अप टिल द थ्रेशोल्ड वोल्टेज? यस. एनालाइज ऑप्शन ए. व्हाई इज दिस द केस? क्योंकि डायोड में करंट नहीं फ्लो करता until your voltage is above the threshold voltage. एंड डायोड एंड रेजिस्टर्स आर इन सीरीज. तो अगर डायोड में करंट नहीं फ्लो करेगा तो रेजिस्टर में भी नहीं फ्लो करेगा. ए इज योर आंसर. लेट्स फर्दर मूव अहेड. लेट्स जूम इन अ बिट. ये क्या सवाल है भाई? Let's see this. The potential difference across a fixed resistor is V. Okay. The power dissipated in the resistor is 5. The potential difference across the resistor changes to a new value. With the new potential difference, the energy transferred in a resistor in a time of 2.25 seconds is this. Energy आपके पास है, time आपके पास है. Can you calculate the power? Power is equals to energy over time.
45 divided by 2.25. Can you calculate the power? 45 divided by 2.25. Power is 20 volts. The initial power क्या थी 5 volts. Now your power is 20 volts. Can you see the power has quadrupled? Power P से 4P चली गई है. What will happen to the voltage? Do you remember this formula? Power is equals to voltage square over R. Can you realize this is a fixed resistor? Resistance will remain constant. Power will directly proportional to voltage. अगर पावर आपकी P से 4P हो गई है, what will happen to the voltage? Voltage will go from V to 2V. B is your answer. Simple. अगर पावर आपकी 4 times हो गई है, voltage 2 times हो जाएगी. B is your answer. Let's further move ahead. The diagram shows a circuit that uses a potentiometer to measure the potential difference in an external circuit. Perfect. We are measuring the potential difference in an external circuit. The potentiometer wire XZ has length L1, ठीक है. It is connected to a cell of known electromotive force E, ठीक है, that has negligible internal resistance. Terminal P and Q are connected to the external potential difference. ठीक है, यहाँ पे आपका एक external potential difference आ जाएगा. That is to be measured. The length of the wire between X and Y is L2. Okay. The ratio of length L1 and L2 is used to determine the potential difference between P and Q in terms of E. Okay. Which condition must be met in order to determine this potential difference? कौन सी कंडीशन मीट होनी चाहिए इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस पोटेंशियल डिफरेंस? बेटा क्या आपको ये बात याद है कि अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करना होता था of unknown value, then you must have a null point या फिर null deflection. और null point और null deflection पे ये current I2 क्या हो जाता था? Zero. Any options like that? B is your answer. If you want to measure the potential difference, unknown potential difference, you can only measure it at the null point. Null point पे आपका current I2 zero हो जाता था. The diagram shows a circuit. Which statement about the circuit is not correct? कौन सा statement correct नहीं है? Electromotive force is the energy transferred per unit charge. That's correct. Energy is transferred from chemical potential energy in the cell to other forms. Okay. The electromotive force of the cell. Okay. When the switch is open, the voltmeter measures the electromotive force of the cell. No. जब switch open है तो voltmeter क्या measure करेगा? Voltage across the lamp. That is zero. Voltmeter पे reading भी zero है. A circuit contains the electromotive force E and internal resistance R connected to two resistances of 2.5 ohms. अच्छा जी 2.5 ohms की दो resistances लगी हुई हैं. The resistors are connected in parallel as shown. The current in one of the resistor is 0.8 ampere. तो बेटा यहाँ पे भी 0.8 ampere होगा. Why? Because अगर ये resistance 2.5 ohm है, it is getting 0.8 ampere. इस 2.5 ohm की resistance को भी 0.8 ampere ही मिल रहा होगा. Which expression where E is in volts and R is in ohm gives the internal resistance? अच्छा आपने internal resistance निकालनी है. How will you calculate internal resistance? First of all, can you calculate the voltage across this resistor? IR. I क्या है? 0.8 into resistance क्या है? 2.5. 0.8 into 2.5. This comes out to be 2 volts. तो हम क्या करेंगे? EMF से what will be the voltage across the internal resistor? EMF E minus 2. What is the total current? ये 0.8 है, ये 0.8 है. टोटल करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.6 एम्पियर. यही 1.6 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा इन द इंटरनल रेजिस्टर. V divided by R is equals to your internal resistance. E minus 2 divided by 1.6. C is your answer for 37. 38 पे आ जाओ बेटा. What is the rest charge of a beta particle? Beta particle का rest mass बताने. Okay. We have to tell the rest mass of a beta particle. Beta particle किससे equal होता है? Equal to a electron. Okay. Electron का mass क्या होगा? 9.11 into 10 raised to the power of minus 31 kgb is your answer. आगे बढ़ते हैं.
What is the class of particles containing mesons and the name of class of particles containing barons? बेटा mesons और barons दोनों किस फैमिली का पार्ट होते हैं? हेड्रॉन्स। मेसॉन में क्या होता है? एक कॉर्क प्लस एक एंटी कॉर्क। बेरॉन्स में क्या होते हैं? तीन कॉर्क्स। ठीक है। A magnesium nucleus 2312 Mg decays by emitting two particles. The resulting nucleus is this. अच्छा जी देखो resulting nucleus में क्या है? 23 Mg12 है। आपका जो फाइनल न्यूक्लियस है वो 23 ये है। बाय इमिटिंग टू पार्टिकल्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका मास नंबर अनचेंज रह रहा है, तो अल्फा पार्टिकल तो नहीं आएगा, उसको कैंसिल आउट कर दो। प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाय वन हो रहा है, दैट मीन्स बीटा पॉजिटिव पार्टिकल आएगा, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमेशा बीटा पॉजिटिव पार्टिकल के साथ क्या एमिट होता है? न्यूट्रिनो। डी विल बी। This marks the end of the paper. If you have any questions, ask right away.